चलो let's start. Mr. X, a proprietor engaged in a manufacturing business. The moment you see this as a manufacturing business, you should write it here that additional depreciation will be applicable in this case. By default, whenever in question you see a manufacturing business, you must think about additional depreciation. Furnishes the following particulars. Opening WDV of plant and machinery as on 1/4/2020 is 30 lakh. So opening WDV is given. New plant and machinery purchase and put to use as on 8th June 2020, 20 lakh. So you please tell me everyone, full depreciation or half depreciation? Full or half? 8 June. Full depreciation. Why? Because it must be used for more than 180 days. June में purchase किया ना, June to March, obviously more than 180 days. New plant and machinery acquired and put to use. New plant and machinery acquired and put to use on 15th December 2020. Full depreciation, half depreciation. 15 December. हाफ डिप्रिसिएशन 3rd अक्टूबर के बाद है ना, तो लेस देन 180 डेज होगा. लेस देन 180 डेज तो हाफ डिप्रिसिएशन. तो ये हो गया. कंप्यूटर अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस. ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया हुआ है, क्या डिप्रिसिएशन मिलेगा? ऑफिस में कंप्यूटर है, क्या डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा? यस और नो? डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? ऑफिस तो बिजनेस का ही पार्ट होता है ना यार. लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं. एडिशनल डिप्रिसिएशन में एनी इक्विपमेंट विच इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और गेस्ट हाउस इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन. ठीक है ना? कंप्यूटर अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस एज ऑन 2nd January 2021. फुल डिप्रिसिएशन, हाफ डिप्रिसिएशन? Half depreciation. Can you please tell me how many blocks of asset do you see? Number of blocks. कितने ब्लॉक दिख रहे हैं आप लोगों को? नंबर ऑफ ब्लॉक्स बता दो ना, कितने दिख रहे हैं आपको? अच्छा, कितने कैटेगरी के एसेट्स है वो तो बता दो. कैटेगरी 1. कैटेगरी तो एक ही है ना, क्योंकि ये भी अदर एसेट में आता है, ये भी अदर एसेट ही है, ये भी अदर एसेट ही है और ये भी अदर एसेट ही है. ऑल आर प्लांट एंड मशीनरी ओनली. तो हमने ब्लॉक का डेफिनेशन कैसे याद रखा है? हाउ डू वी रिमेंबर ब्लॉक का डेफिनेशन? सेम कैटेगरी एंड सेम रेट. सेम कैटेगरी सेम रेट. तो आप मुझे बता सकते हो क्या प्लांट एंड मशीनरी का रेट कितना होता है? इतने प्लांट एंड मशीनरी का रेट क्या है? रेट बोला नहीं उन्होंने. 15%. 15%. वेरी गुड. प्लांट एंड मशीनरी का रेट जब बोलते नहीं है तो 15%. एंड कंप्यूटर का 40%. 40%. तो जब सेम कैटेगरी में दो रेट है तो कितने ब्लॉक हो गए हमारे? दो ब्लॉक हो गए ना, ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2. इज इट क्लियर? Yes. ऐसे हमें सोचना होता है. व्हाट आर दे रिक्वेस्टिंग अस? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. कर लेंगे सर. एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 for the assessment year 21-22. Assume that all the assets were put to purchase by अकाउंट पे ही, क्योंकि 10,000 के ऊपर की वैल्यू है. 10,000 के ऊपर का कोई भी एसेट आप कैश में परचेस नहीं कर सकते. तो उन्होंने बोल दिया अज्यूम कर लेना कि हमने अकाउंट पे ही चेक से किया, विच इज एक्सेप्टेबल इन द लॉ. चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट प्रेजेंटिंग द क्वेश्चन. आपके नोटबुक में लिख दो प्लीज. एवरीवन प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक. इलस्ट्रेशन नंबर 1. पेज लिखना है तो पेज लिख दो, कौन से पेज से ये लिया हमने. 4.109. था 4.190 CA इंटर. ठीक है, फटाफट डेटा लिखना चालू कर देंगे. असेसी, मिस्टर एक्स,
और ब्रैकेट में मैं रेड इंक में लिख रहा हूं मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो आपको हमेशा अलर्टनेस रहनी चाहिए कि हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना है। लीगल स्टेटस, इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस और AY 21-22, PY 20-21, pen dash. After writing these many things, we should write what is demanded by the question. Question demanded computation of depreciation under section 32. डेप्रिसिएशन एडिशनल डिप्रेशन दोनों यहाँ पे कवर होते हैं, तो मुझे दोनों वर्ड नहीं लिखने हैं। देन वी हैव टू क्रिएट सिंपल टेबल ऑफ 2 ब्लॉक। जब 2 ब्लॉक होते तो 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं हमें। Plant and machinery 15%, computer 40%. Please let me know if you are done with the format. Yes, sir. How do we start? We will start with opening WDV, right? We have to compute depreciation, so we have to start with opening WDV. Opening plus purchase minus sale. This is the formula. Opening plus purchase minus sale. So we have to start with opening 30 lakh rupees plant and machinery. So let us write 30 lakh here. And computer does not have any opening block. So dash 30 lakh. After that, add purchase. But in purchases, we will divide it into 2 columns. Less than 180 days and 180 days or more. ठीक है ना, ऐसा डिवाइड करके रख दिया मैंने, लेस देन 180 डेज एंड 180 डेज और मोर। देखते हैं, कंप्यूटर का तो इजी है, 3 लाख है, लेस देन 180 डेज है, तो वहां पे लिख देता हूं मैं लेस देन 180 डेज में, यहाँ पे 3 लाख लिख दिया मैंने। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी में 2 है, एक फुल डिप्रिसिएशन वाला है, एक हाफ वाला है। हाफ वाला 8 लाख है, पहले वो लिख देता हूं, यहाँ पे 8 लाख वाला आ गया। और अभी एक फुल वाला है 20 लाख, तो 20 लाख यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो टोटल ले लेते हैं। यह आता है 58 लाख और आता है 3 लाख। अब हमने ज्यादा सेल के ऊपर अभी तक बात नहीं किया, लेकिन अज्यूम करो कि अगर सेल ऑफ असेट होता तो यहां से सबट्रैक्ट हो जाता है, उसको मनी पेएबल बोलते हैं। इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस यहां से माइनस होता है, लेकिन कुछ सेल किया नहीं है, तो द नेट असेट इज अ क्लोजिंग WDV। $58 लाख और 3 लाख। जो क्लोजिंग WDV है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन हमें इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। सो लेस डिप्रिसिएशन, एक लाइन यहां पे कैलकुलेशन के लिए छोड़ दो या ऐसे रहने दो, लेस एडिशनल डिप्रिसिएशन। इसके लिए भी जगह छोड़ दो, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। यहां पे एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, यह आएगा ओपनिंग WDV एज ऑन 1/4/2021।
So computation of depreciation on plant and machinery was very easy. So I computed here only 3 lakh into 40%. That's a rate, and 1/2 because we have to provide half depreciation. Now we have to compute depreciation on 58 lakh. How do we compute depreciation on 58 lakh? So we will create a working note here. Working note number one, depreciation on plant and machinery. So obviously first preference we have to give to that asset which was purchased and put to use for less than 180 days. First preference we always give to less than 180 days criteria. I'll tell you the logic behind this. Less than 180 days. So how much value of asset we are having in less than 180 days criteria? So we are having 8 lakh in the less than 180 days criteria. Therefore, half depreciation has to be provided on 8 lakh out of 58 lakh. Okay. So 8 lakh into 15% into 1/2. So why this 1/2 is important? Because it is less than 180 days. Okay. It is less than 180 days. So please tell me what is the value of depreciation here on 8 lakh, 15% 1/2. Please tell me. 60,000. 60,000. And now we have to compute the balance depreciation. So depreciation on balance amount. Balance, if any. I did not write here 180 days or more. Otherwise, you will make a mistake like Vaishnavi. If I write here 180 days or more, then I'm talking only about 20 lakh. No. I don't want to talk only about 20 lakh. 20 lakh and whatever is there in opening minus sale, whatever is the value. So out of 58 lakh, I have provided depreciation on 8 lakh. So balance if any. So balance if any means, sir, we have to compute depreciation like this. 58 lakh was the total value. Out of that 8 lakh rupees provided. The balance if any subject to 15% full depreciation. So can you tell me what is the depreciation on 50 lakh into 15%? 7,50,000. So total is 8,10,000. Please write down that number in the main table in the depreciation column. 8,10,000. Okay. Now we are supposed to provide additional depreciation. Let me show you that also in working note. But before I can start my additional depreciation, you tell me whether we provide additional depreciation on the total block or only new asset. New asset. New asset. New asset. And where do I get new asset? Opening WDV is not a new asset. Sold asset is not a new asset. Only purchase asset, right? Yes. These are the new asset. Out of that, computer is not eligible for additional depreciation because it was installed in the office premises. So now we have to talk about only these two assets, 20 lakh and 8 lakh. In that also, 20 lakh is eligible for full year depreciation and 8 lakh is eligible for half year depreciation. So let me write down as working note number 2, additional depreciation. I'm writing it here. I'm not taking any chance because you are doing it for the first time. Only on new asset, new plant and machinery. Only on new plant and machinery. Okay. Write down here point number 1. Less than 180 days. Always give preference to less than 180 days. In that column, we are having value 8 lakh. Into how much percentage? Into how much percentage? Additional depreciation. What is the rate of additional depreciation in ordinary India? Anyhow, now in whole India. What is the rate of additional depreciation? 20. Thank you. 20%. Into 1/2. So 8 lakh into 20% into 1/2 is equal to 80,000. And now I should not write here balance if any. Here I have to write
Sir, please understand here I have to write 180 days or more. Why, sir? Because here we are computing only on the new asset. So either there will be less than 180 days asset or there will be more than 180 days or more asset which is eligible for full additional depreciation. You please compare this point with the above point. Here I have written balance if any, because depreciation we compute on closing value. Depreciation we compute on closing value, closing WDV. Depreciation we compute on closing WDV. Okay. The depreciation we compute on closing WDV, whereas additional depreciation we compute only on new asset which is purchased during the year. Therefore, there is a language difference in my working note. So 180 days or more. So here we are having 20 lakh rupees. 20 lakh rupees into 20% is equal to, it was 20 lakh only, right? Yeah, 20 lakh into 20% is equal to 4 lakh. So my additional depreciation is 4,80,000. I will subtract that additional depreciation from this 4 lakh. 80,000. Can you give me closing WDV of both? Here I can compute easily 2,40,000. Closing WDV or opening WDV for the next year. Okay, that's good. 45 lakh 10,000 and 2 lakh 40,000. I believe you people have understood at least 50%. I don't expect more than that, but at least 50% of working. 50%. Yes, sir. Yeah. So let us write one note here immediately. Let us write one note here. Note 1. You know, this half additional depreciation will be available in the next year. Hello, this half, no, we have only claimed half year. Half in this year and half in next year. I have told you this. Arun Jaitley sir amended the law for this, that people should be eligible to buy asset even in the second half of the year. Just because of loss of additional depreciation should not postpone the decision of purchasing the asset. तो आपको मैंने क्या बता के रखा है कि सर अगर करंट ईयर में उन्होंने हाफ एडिशनल डिप्रिसिएशन लिया तो नेक्स्ट ईयर में भी वो हाफ बैलेंस डिप्रिसिएशन ले सकते हैं. तो लेट अस राइट डाउन फ्यू नोट्स. नोट नंबर 1, please write down. Note number 1. If assets is purchased and put to use for less than 180 days in the year of purchase, then depreciation as well as additional depreciation shall be restricted to the extent of 50% of eligible depreciation. This is first point. Please excuse my handwriting. If asset is purchased and put to use for less than 180 days in the year of purchase, then depreciation as well as additional depreciation shall be restricted to the extent of 50% of eligible depreciation. So please write down that first note. Note 2.
Note 2, assessee is engaged in the manufacturing business assessee engaged in the manufacturing business and has acquired new plant and machinery during the previous year, which enables him to avail करते हैं, to avail additional depreciation at the rate of 20% of actual cost. 20% of actual cost. Next para. However, any equipment installed in office or guest house shall not be eligible for an additional depreciation. That was my note 2. Note 3. In case where additional depreciation is claimed only to the extent of 50% of total additional depreciation, then balance half additional depreciation can be claimed in immediately next year. That is rupees 80,000 on or in AY 22-23. ये 80,000 जो है वो AY 22-23 में हमें मिलेगा. कौन सा 80,000 सर? ये वाला 80,000. ये वाला 80,000 हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ ही लिया था. Please let me know if you did not understand anything.